In this video, we will discuss about integral domain. So we write down integral domain. For defining integral domain as let R be any non-empty set. Non-empty set, it means it contains at least one element. And plus, that is addition. And into multiplication. Addition and multiplication be two binary operations. Be two binary operations on R such that we have a step A, R under addition is an abelian group. Abelian group. Abelian group means it satisfy five properties. So R under addition, we have algebraic structure that be a group. So we have first property that is closure. So for closure property, we take two elements of set R, A and B belongs to R, which implies that A plus B also belongs to R. Second, we have associative. So for associative law or property, we have three elements, A, B, C, which belongs to R. So then we have A plus B plus C is equal to A plus B plus C. So this is the second property, that is the associative property. Now we move to the third property, that is identity. Identity. Under addition, identity क्या होती है? That is zero. So zero belongs to R. So we can say that there exists zero belongs to R such that we can take the element A. So A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A. So for every A belongs to R. So A belongs to R, that means the third property satisfied. That is the identity. Addition identity क्या होती है? Zero. Now we shall move to the fourth property. So that is inverse. So for inverse, so we consider a element which belongs to R. So then the additive inverse of A. So we write down then the additive inverse of A is minus A. So minus A, so that minus A is also belongs to the R. So such that minus A भी R का ही member होना चाहिए. So we can say that A plus minus A is equal to minus A plus A is equal to identity. So that identity is also belongs to R. So 0 also belongs to R. We have already uh, used in step 3. So now we move to the fifth property, that is the commutative. That is the commutative law. Commutative property. So for commutative property, we have two elements, A and B, which belongs to R. So then we can say that A plus B is equal to B plus A. So the set R under addition satisfy all five properties. So this is our step first. Now, so here we can see that R under addition is an abelian group. Abelian group. Now we move to the second step. Second step we denoted by B. R under multiplication. So here we use the second binary operation, that is multiplication. So R under multiplication is semi-group. Is semi-group. Semi-group means we satisfy two properties.
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। पहले स्टेप में हमने क्या किया, अंडर एडिशन क्लोजर प्रूव किया। यहाँ पर अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर शो करेंगे। सो ए p belongs to r, which implies that a into b is also belongs to r. So this is the closure property under multiplication. Second, we show the associativity. So associative property, so we take three elements A, B or C which belongs to R. So then A into B into C is equal to A into B into C. So this is the second part. So under multiplication semi group के लिए आपको closure और associative prove करना है. Now we move to the third. Third is R is distributed. That means addition, the multiplication is distributed with respect to addition. So multiplication is distributive with respect to addition. With respect to addition. So multiplication is distributive with respect to addition. So here we prove that right distributive and left distributive. Right distributive and left distributive. So दोनों ही prove करने हैं हमको. That is the third property. So right distributive and left distributive. So first we shall prove that the left distributive. So first part we write down as left distributive. So for left distributive, we take element A, B, C belongs to R. So then A into B plus C, or the multiplication is distributive with respect to addition. So this can be written as A into B plus A into C. So this is our left distributive. Now we write down the right distributive. Right distributive. और लेफ्ट में स्टार्ट किया हमने मल्टीप्लीकेशन को, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए राइट साइड. तो वी कैन राइट डाउन दिस एज a plus b into c is equal to a into c plus b into c. So this is our right distributive. If we satisfy these nine property means 5 आपकी अंडर एडिशन अबिलियन हो गया, 2 अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप हो गया, 2 हो गया हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट, देन आर इज सेड टू बी ए रिंग. तो यहाँ तक हम बोलते हैं कि आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज सेड टू बी ए रिंग. इज सेड टू बी ए रिंग. अब हमें रिंग से आगे मूव करना है कि हमें हमें प्रूव करना है क्या, इंटीग्रल डोमेन. अब इंटीग्रल डोमेन के लिए फर्दर प्रॉपर्टीज क्या होंगी. सो नाउ द फर्दर प्रॉपर्टी वी टेक एज डी. तो डी, so that means under multiplication, so d का फर्स्ट पार्ट होगा commutative. commutative under multiplication. commutative under multiplication. तो ये ध्यान रखना होगा, commutative property under multiplication. That means R under multiplication is commutative. R under multiplication is commutative. So we take two element of R. So let A and B which belongs to R implies that A into B belongs to R. So R under multiplication commutative. Then second property, R having unity element. R having unity element. R having unity element under multiplication. So we can say that under multiplication. क्योंकि एडिशन के लिए यूनिटी तो है 0, बट हियर वी रिक्वायर अंडर मल्टीप्लीकेशन. सो वी कैन राइट R अंडर मल्टीप्लीकेशन एज यूनिटी एलिमेंट. और यूनिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1. सो अंडर मल्टीप्लीकेशन हैज यूनिटी एलिमेंट. So 1. So 1 belongs to R. So 1 belong, अगर यूनिटी एलिमेंट 1 भी उसमें बिलोंग कर रहा है. ओके, सो अंडर मल्टीप्लीकेशन हो गया हमारा यूनिटी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी फॉर डी सेक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी हो गया हमारा विदाउट जीरो डिवाइजर. विदाउट
zero divisor. So without zero divisor, this is the next property. So without zero divisor means that A not equal to 0 and B not equal to 0. So which implies that AB not equal to 0. So implies that AB not equal to 0. So without zero divisor. Or if AB is equal to 0, so we can say that either A equal to 0 or B equal to 0. So then we satisfy these all properties. So if R under addition, multiplication satisfied all above properties, so then R is said to be a integral domain. Said to be a integral domain. So basically तो कितनी properties हो गई? 12 property. So we satisfy all 12 property. So then R is said to be a integral domain. So we take one example based on integral domain. For example, so we have a example prove that set of integer I which contain the element 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 and so on is an integral domain. अब हमें इसे प्रूव करना है कि वो इंटीग्रल डोमेन होगा या नहीं होगा. Is an integral domain. So we do the solution of this. So for solving, first we shall prove that I under addition is an abelian group. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप से. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी टेक एज क्लोजर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वी कैन टेक एनी टू एलिमेंट. और हम दो एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं, वो हमारे पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर, कोई भी दो नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं. जैसे सपोज कि हमने ए इक्वल टू 1 ले लिया, बी इक्वल टू 2 ले लिया. अब दोनों ही एलिमेंट जो किसको बिलोंग कर रहा है, आई को बिलोंग कर रहा है. तो जब हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो मीन्स ए प्लस बी परफॉर्म कराएंगे, तो इट मीन्स हम क्या लिख सकेंगे 1+2. और 1+2 क्या होता है 3. जो 3 होगा वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, मेंबर ऑफ आई होगा, बिलोंग्स टू आई होगा. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे क्लोजर सेटिस्फाइड. तो क्लोजर हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा. अब सेकंड प्रॉपर्टी ऐसे ही हम एसोसिएटिव के लिए जाएंगे. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. तो फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी टेक 3 एलिमेंट. तो यहाँ पर भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए इक्वल टू हमने 1 ले लिया, बी इक्वल टू नेगेटिव एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू. और सी इक्वल टू हमने 3 ले लिया. अब प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस बी और प्लस सी. तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस 2+3 इज इक्वल टू 1+2 और +3. तो दिस कैन बी रिटन एज 1+5 इज इक्वल टू 3+3. 1+5 कितना हो गया 6, 6 इक्वल टू 6. तो दैट मीन्स जो 6 है वो भी किसका मेंबर आ रहा है निकल के, इंटीजर का, इंटीजर नंबर आ रहा है. ओके, सो सेटिस्फाइड. So now we move to the third property. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, आइडेंटिटी. अब ये तो हमें पता है कि जब हम सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहे हैं तो सेट ऑफ इंटीजर में जीरो तो बिलोंग करेगा ही करेगा. तो जीरो बिलोंग्स कर रहा है आई को. अब जीरो जब बिलोंग्स टू आई कर रहा है तो अब उसके लिए हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं कि अगर हम जीरो को किसी नंबर में हम ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें ऑब्टेंड होता है. दैट मीन्स 1 में ऐड किया तो 1 आया, वो भी 1 किसका एलिमेंट है, और आई का एलिमेंट है. तो मीन्स हमें आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर गई हमारी. ओके, अब जी ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए. तो नाउ वी मूव टू द फोर्थ. फोर्थ क्या है हमारी, इनवर्स है. अब इनवर्स के लिए अब हमने अज्यूम किया कि लेट ए इक्वल टू 2 है. अब ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए का एडिटिव इनवर्स होगा -a.
तो माइनस ए क्या होगा, मतलब -2 होगा, मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा। -2 भी आई में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों ही नंबर है हमारे, प्लस भी और माइनस भी आई को बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे फिर इसको, ए प्लस माइनस ए, तो ए प्लस माइनस ए, तो 2 प्लस -2 इज इक्वल टू -2 और +2, ये क्या हो जाएगा, जीरो। आइडेंटिटी आ जाएगा, और जीरो तो हमारा बिलोंग्स टू आई कर ही रहा है, तो इनवर्स सेटिस्फाई कर जाएगा। तो सारे एलिमेंट का, अब ये दो ही नहीं, दो की जगह आप तीन लोग, चार लोग, 5 6 से कुछ भी नंबर ले रहे हैं, तो इनवर्स सभी का एग्जिस्ट कर रहा है। -2 भी होगा, उसमें -3 भी होगा, -4 भी होगा, -5 भी होगा। ओके, नाउ वी shall move to the next property, that is commutative। अब एडिशन कॉम्पिटिटिव ऑलवेज होता ही है, क्योंकि ये तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज में आता है कि जब ए बराबर हमने 2 ले लिया सपोज, और बी इक्वल टू हमने ले लिया 3, तो जब हम ए प्लस बी करेंगे तो गिव्स अस बी प्लस ए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, सो मीन्स 5 इज इक्वल टू 5, और जो 5 भी होगा वो मेंबर ऑफ आई होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि आई अंडर एडिशन इज अबेलियन। आई अंडर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो आई अंडर एडिशन हमारा अबेलियन ग्रुप हो गया। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में तो आई अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप। तो वी मूव टू द सेकंड पार्ट, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट सेमी ग्रुप के लिए, तो मल्टीप्लीकेशन में भी दो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट हमारी जैसे क्लोजर हो गई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप प्रूव करना है, तो हमने ए इक्वल टू 2 ले लिया, और b इक्वल टू हमने ले लिया सपोज -3। जब हम a इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 हो जाएगा, तो दिस मीन्स -6 हो गया। -6 भी आई का ही मेंबर होगा, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड हो गया हमारा एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए वी टेक 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स ले लेंगे। ए इक्वल टू हमने 2 ले लिया, बी इक्वल टू 4 ले लिया, सी इक्वल टू 6 ले लिया, कोई भी 3 एलिमेंट आप ले सकते हो। तो हम लिखते हैं कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6। ये इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 इंटू 6। तो 24 2 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 इज इक्वल टू 48, और 48 भी जो होगा वो आई को बिलोंग करेगा। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप भी हो जाएगा। तो एल एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है को। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप हो गया। अब आते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव पहले प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव शो कर देंगे, फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में भी आपको ये रखना है कि मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ना कि एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट लिए कि ए इक्वल टू हमने ले लिया 2, बी इक्वल टू ले लिया 3, और सी इक्वल टू ले लिया 5। अब हम मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव दिखा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये होता है ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। तो ए हमारा है 2, और बी कितना है 3, और प्लस हो गया 5, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 5। तो नाउ वी राइट डाउन दिस, 2 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 8 2 जा कितना हो गया, 16, और 16 इक्वल टू 16, और 16 भी आई। तो मल्टीप्लीकेशन मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी शो करना है, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी सिमिलर शो करेंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए सेम एलिमेंट ले लो, या आप कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं। तो बी इक्वल टू 4 ले लिया, सी इक्वल टू 6 ले लिया। तो यहाँ पे हमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव शो करना है, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, तो यहाँ पर हमने लिखा कि 2 + 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6। तो 2 + 4 कितना हो गया, 6, 6 इंटू 6 इक्वल टू 6 2 जा 12 हो गया, और ये हो गया 24। तो 6 6 जा 36, 36 इक्वल टू 36, और ये किसको बिलोंग कर गया, आई। तो ये हमारा 9 प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। जब 9 प्रॉपर्टी होल्ड कर गया तो हमारा आई क्या हो गया, आई अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग। मतलब एक रिंग का भी एग्जांपल आपको मिल गया।
ये रिंग भी हो गया। अब रिंग के बाद आते हैं हम इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी जो रिमेनिंग रह गई है। रिमेनिंग प्रॉपर्टी में फर्स्ट आती है हमारी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तो मतलब आई कॉम्यूटेटिव होना चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो आई इज कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। आई इज कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो कॉम्यूटेटिव तो हो ही जाएगा मल्टीप्लीकेशन। लेट ए इक्वल टू हमने जैसे 3 ले लिया, बी इक्वल टू हमने 7 ले लिया, कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू, ये सबके लिए होल्ड करता है। मैं तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 3। तो 7 3 जा 21, 21 इक्वल टू 21, और 21 भी आई का। तो कोई भी दो एलिमेंट आप लेके कॉम्पिटेटिव शुरू कर सकते हैं, और वही दोनों एलिमेंट आई को ही बिलोंग करेगा जब हम कॉम्पिटेटिव सेटिस्फाई कराएंगे। नाउ यूनिटी एलिमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम किस पर, यूनिटी एलिमेंट पर। अब यूनिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन यूनिटी एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट इज 1। अब 1 उसको सेट को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा आई को, तो हम सेट पे जाएंगे दोबारा वापस। तो सेट पे जाएंगे तो हम देखते हैं कि 1 तो ऑलरेडी उसमें है, तो दैट मीन्स 1। सो हियर इज 1, सो दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू आई। सो मतलब 1 आई में बिलोंग कर रहा है, तो मैं यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है उस सेट के लिए। So here we can say that 1 belongs to I. अगर 1 belongs to I, that means unity element exists। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि unity element exists, unity element भी उसमें exist कर रहा है। अब नेक्स्ट जाएंगे हम विदाउट जीरो डिवाइजर, लास्ट, विदाउट जीरो डिवाइजर। So without zero divisor, तो सेम वी कैन से दैट अगर a नॉट इक्वल टू जीरो है और b नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इम्प्लाई करेगा a b नॉट इक्वल टू जीरो। और जैसे a इक्वल टू आपने 2 ले लिया, b इक्वल टू 3 ले लिया, तो a b जो होगा उसका प्रोडक्ट वो भी क्या होगा, 6 होगा, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, सो वी कैन से दैट, और यू कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो है, तो इम्प्लाइज करे आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो विल सेटिस्फाई। तो वी से दैट आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो आई क्या हो गया हमारा, इंटीग्रल डोमेन। सो रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज,